रिमझिम गिरे सावन, मचल मचल जाए मन, भीगे आज इस मौसम में। A lot of people talk about their parents. I often talk about my grandparents. My grandmom really affected how I think in the kitchen, and my grandfather really affected how I think in life. तो बीजी जब ऐसे बारिश होती थी, बीजी बोलते थे पुत्र आ एक पैसे ना मींह पैंदा है। तो वी आर फार्मिंग फैमिली है, तो हम लोग बोलते थे क्या बीजी पैसे थोड़े ना है, पानी बरस रहा है। कहते नहीं बेटा, ये जो है फसल के लिए अच्छी है बारिश, कल ये बारिश ज़मीन में जाएगी, फसल अच्छी होगी तो पैसा आएगा ना, तो ये समझ लो कि बस पैसा ही बरस रहा है। इसलिए अभी भी कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है या कोई सोर्स ऑफ इनकम आता है, पहले मंदिर में जाता है। My go-to person if I have to discuss my finances is Pallavi, my wife, because the concept of finance I have inherited from her. तो उसी के पास जाऊँगा। There are some things that we get in virasat from a middle class family. You know, saving for your kids is one of them. After Ishan was born, that is when I started looking at money as a subject. कि यार हाँ, ये interesting चीज़ है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। After I became a dad, I was introduced to this book, Rich Dad Poor Dad. और इसने मेरे को थोड़ी अकल दी कि रणवीर, आपको सिर्फ पैसा कमाने की जरूरत नहीं, पैसे को भी पैसा कमाने का मौका दे। ये क्या है भाई? Pick your swipe. Which of these options would you swipe your card for? A ghazal event or a jazz event? A ghazal event. From being a restaurant or a hotel chef, which I still am, I took on to the business of food media, you know, as a TV presenter or a television chef, judging reality shows. कैमरा और फिल्म मेकिंग का जो मीडियम है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। और बेसिकली आई जस्ट पुट टू थिंग्स दैट आई लव टुगेदर। तो हमने कहा नो, वी वांट टू बी एबल टू क्रिएट कंटेंट फ्रॉम स्क्रैच, right from ideation to post production हम खुद करेंगे। We started with a studio which was 150-200 square foot का गाला। What we have right now is 3,000 square feet. You always cut your hands with a blunt knife, never with a sharp knife. So keep your craft sharp, your knife sharp, and you won't really have to worry. I'm proud of the fact that I invested in my craft. मेरी पहली सैलरी जो थी वो 2,612 रुपये थी, दूसरी सैलरी 3,502 रुपये थी, तीसरी सैलरी 5,801 रुपये थी। I'd still be happy if I had the same success with half the money, or dare I say half the success with half the money. I'm making wheat chef. मुझे याद है एक बार I was in Denmark और नाइफ मेरे को बड़ी पसंद आ गई और मैंने ले ली और मैंने एज यूजुअल कार्ड स्वाइप कर दिया। तुरंत पल्लवी का फोन आ गया इधर से, इंडिया से, कि ये 1.5 लाख रुपए तुमने कहाँ खर्च कर दिए। जब इसने बोला 1.5 लाख तो मेरे को टेंशन होगी, अब वो बेचारी वैसे ही पड़ी है। बताओ, अ टिकट टू द 1983 वर्ल्ड कप फाइनल और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। टिकट टू द 1983 वर्ल्ड कप फाइनल। Who are you cooking for and how much can they pay for what you're cooking for is the true mantra of success in this business, you know. And the second most important thing is never start out a restaurant without at least 6 months of working capital. A cooking session with Julia Child or with Anthony Bourdain. A day with Anthony Bourdain any day. If I had to go back in time and give some financial ज्ञान to Ranveer, it would be कि भाई देख, यारी दोस्ती एक तरफ और फाइनेंस एक तरफ। रिलेशनशिप्स और फाइनेंस को मिक्स मत कर। By mixing both, you actually devalue yourself as a professional, and you should never do that. My first credit card appeared in my life when I was 42. I had this fear of credit cards. मतलब मुझे लगता था यार जो पैसा मेरा नहीं है मैं कैसे खर्च कर दूँ, you know? Now I get the fact that you know, it is not about your money or somebody else's money. It's about money. You need to respect money in whatever way, form
or manner it sort of appears. वो कहते हैं कि प्यार और पैसा बांटने से बढ़ता है, तो प्लीज़ शेयर द लव, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी बहाने मैं भी कर लेता हूँ सब्सक्राइब। डन। सी यू लेटर। ईशान।